Today in this video I am going to cover the practical use of the accessibility option, okay, that is provided by the Windows for those people having some difficulties while using computer. So as I discussed it earlier in the previous video as well, here in this video we will go through all these options one by one empirically. So for that we need to open control panel. Click on the start button and then in the search box type control, then the control panel will open. So as you all know that control panel is the centralized configuration area in the Windows where we can change and we can modify the settings, or we can personalize the Windows setting here in the control panel. We got all the computer settings. The view by default is a category view. We can change it, but the category view, I just prefer the category view. So we can see all these settings over here at once. Here we have option ease of access, so we can click on it, and then here is the access center. Click on it, and now the access center get open. Here different accessibility options are available. The first one is start a magnifier, that is used for enlarge a part of the screen, so a person, those who are suffering from a low vision, can see the icons and the text clearly. Start narrator. So narrator reads aloud text on the screen. Start on screen keyboard. If a person is not able to use the keyboard correctly, then they can also use screen keyboard. Set up a high contrast. So high contrast, the high contrast setting is an accessibility feature that is used to assist people with vision impairment, so they can change the size and color of the font and the background for ease of viewing. So now one by one we are going to check all these options. Sticky keys. So sticky keys allow the user to press and release a modifier key such as shift, control, alt or window key and have it remain active until any other key is pressed. So अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेके एक मैं ओपन कर रहा हूँ नोट पैड. अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ. नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट whole text, we have to press control along with A. We can't release control to get got selected. If I activate sticky keys here from the access center and then make the keyboard easier to use, so here you can see turn on sticky keys. Press keyboard shortcut such as control alt delete one key at a time. So now I am selecting it and then I am applying. ठीक है, अब हम देखेंगे कि now if I am going to just press control at one time and then I'm pressing A, then it will select it. Similarly, if you want to use any modifier key, then you can press it and then you can release it, and then now you can use any key combination that is used to perform the operation. For example, if you want to copy something, then you have to press control along with C, both key at the same time. But now you can, after activating sticky keys, now you can release the control key, or you can press control key once and then you can release it. Now you press C key for copying the text, one only a single key, C key at a time. So now it get copy. Okay, so this is for the people who are suffering from some physical disabilities, or those who have some problem while doing some repetitive task. It will also can use to reduce the repetitive strain. So we can only press a single key at a time. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है दो की एक साथ प्रेस करने में, तो हम लोग ये स्टिकी कीज की मदद से हम लोग कंट्रोल को स्टिकी की बनाने के बाद ओनली हम लोग एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे या शिफ्ट प्रेस करेंगे या विंडो की प्रेस करेंगे, तो एक बार प्रेस करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी. एक्टिवेट होने के बाद आप उसका कोई भी की कॉम्बिनेशन, लाइक कंट्रोल ए था तो ए ओनली प्रेस कर सकते हैं, सी था तो सी प्रेस कर सकते हैं फॉर कॉपिंग अ टेक्स्ट, एक्स था तो एक्स प्रेस कर सकते हैं फॉर कटिंग द टेक्स्ट. सिमिलरली आप कोई से भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं सिर्फ सिंगल एट अ टाइम. अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिल्टर कीज. फिल्टर कीज
It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repetitive keystroke. तो ये उन पर्सन्स के लिए है जिनके हाथ थोड़े शिवर करते हैं, थोड़े हिलते हैं while typing on the keyboard. They can use this feature, filter keys. Okay, so here we can turn it on the filter keys. तो इस चेक बॉक्स पे हम टिक करेंगे and then we can apply. Okay, so now if you type any other word twice or more than one time, then it will ignored. So this is for those people who are facing some difficulties while using keyboard. इस filter keys की मदद से ये difficulties को हम overcome कर सकते हैं. So now next one is toggle key. Okay, so toggle key, that is designed for the people who having some vision impairment or cognitive disabilities. So इसमें क्या होता है कि कोई भी लॉकिंग कीज को प्रेस करने के बाद एक साउंड इमिट होती है. ओके, हाई साउंड इमिट होती है जब जब हम कोई भी लॉकिंग की को प्रेस करते हैं, इनेबल करते हैं या फिर ऑन करते हैं, और एक लो साउंड इमिट होती है जब जब हम यही लॉकिंग की को दोबारा से डिसेबल कर देते हैं. तो लॉकिंग की कौन कौन सी है, जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है. तो कैप्स लॉक, कैपिटल लॉक, जिससे हम लोग we just switch all the letters to the capital, that's why it's called as a capital lock. Number lock, num lock, that allow the user to type number by pressing the keys on the number pad rather than having them act as up down left right. स्क्रॉल लॉक हम लोग बेसिकली इसको हम लोग कभी कभार ही यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट में, एक्सेल के अंदर रिवर्स करने के लिए फंक्शन, और कर्सर की का फंक्शन रिवर्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रॉल लॉक. नाउ व्हेनेवर वी गोइंग टू प्रेस दीज लॉकिंग की, द साउंड विल एमिटेड. ओके, तो हम भी चेक करते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ हम लोग टर्न ऑन कर देंगे. ओके, टर्न ऑन दी टॉगल कीज एंड देन अप्लाई. अब जैसे ही हम लोग लाइक कैप्स लॉक ऑन करा मैंने, अब मैं हाइट साउंड एमिट हुई, और अब जब ऑफ करते एक लो साउंड एमिट हुई. सिमिलरली नंबर लॉक एक साउंड एमिट हुई, देन एक लो साउंड एमिट हुई. सो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वन इज अ साउंड टैब, साउंड सेंट्री. ओके, तो साउंड सेंट्री में क्या है कि ये उन पर्सन के लिए हेल्पफुल है जो थोड़े ऑडिटरी एम्पेयरमेंट से जूझ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जिनको सुनाई कम देता है, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम है. तो बेसिकली वेन एवर वी कमिट अ मिस्टेक या हम कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं, नाउ व्हेन वी इनेबल द साउंड सेंट्री, क्लिक इट ओवर हियर, विजुअल अल्टरनेटिव फॉर साउंड. सो यहाँ पर वी कैन टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन. ठीक है, तो विजुअल नोटिफिकेशन भी साउंड के साथ साथ भी हमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई ब्लिंकनेस या फिर डेस्कटॉप फ्लैशिंग हमें नज़र आ जाएगी. ओके, तो यहाँ पर मैं फ्लैश डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अप्लाई. विंडो आर NOTE. Now see, along with the sound, along with this and the flashing background color changed. So जो डेस्कटॉप फ्लैशिंग आप लोगों को नज़र नहीं आई बिकॉज वो इस रिकॉर्डर में मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पाई है. ओके, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे देन यू विल गेट इट. ओके, नेक्स्ट वन इज शो साउंड. तो हियर शो साउंड, it also convey the information with sound. It also provide the some visual text caption or informative icons. Okay, display tab, high contrast. Okay, high contrast में क्या है, where we can enable the high contrast for some vision impairment persons. Okay, turn on or off high contrast when left alt plus left shift plus print screen is pressed. So you can change, or you can change the font size and font style from the contrast theme. Okay, in personalization option. Now next one is cursor option. So cursor option, this is also the feature that assists people with vision impairment. Okay, for example if I open notepad, now you just see a cursor is blinking over here. We can change the width of that cursor, thickness of that cursor, and also the blinking rate. Go to the control panel, go to the ease of access center, and then here on the make the computer
easy to use. And now here we can change the make the focus rectangular thickness, and now we can change the thickness of blinking cursor over here. Now I'm changing it to 5. Okay, so now turn off all the animation, remove background images, now apply. You can see the cursor thickness is increased. Okay, now next one is, so now mouse keys is an accessibility feature that assists people who have difficulty using a mouse. Okay, if they are having some difficulties while using a mouse, if they are not able to rotate the mouse, then now they can use the numeric keypad. So now we can see it over here, control panel. We have option make the mouse easier to use. Okay, click on it. There are different cursor option available. We can change the color and size of the mouse pointer and change color of the mouse according to the requirement. Turn on mouse keys. Turn on mouse keys means we can use number pad as the mouse if our mouse is not working correctly and some having some problem difficulties while hovering the mouse and while using the mouse. So we can turn it on, and when you apply it, now we can use this key, numbering key. Okay, now we can see numeric key I just pressed, और now I can use the mouse. देखिए बहुत हल्का हल्का सा move कर रहा है mouse. So we can change the speed over here. Okay, and we can change. Okay, now we can change the acceleration. Apply. Now they just see we can use the mouse like this. Okay, up and down. And if you want to select certain things, then cancel 5. Okay, so this is how we can use a numeric keypad as a mouse cursor to rotate the mouse cursor. Okay, now next one is general tab. So general tab, basically this feature is used to configure these accessibility feature. Okay, either we can turn it off for a person or either we can turn it on for a person. Okay, whenever we turning off or turning on, a sound will emit. Okay, thank you all of you. So I think, okay, this is all clear for you. If you have any problem, then you can ask me. Okay, thank you.